Welcome students to the digital class of mathematics. Today in our first session of chapter number 12, exponents and powers, we will be discussing about the laws of exponents and exercise 12.1 question number 1 to 3. So now let's see what are the laws of exponents. So students, in your class 7th, you have already learned the laws of exponent. The first law is when you are multiplying the same number with the different powers, so you directly add them. For example, if you are multiplying 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2, here the bases are same and the powers are different. So in that case, you directly add the powers. That means 3 plus 2. So 3 plus 2, that means 2 raised to the power 5. 2 raised to the power 5 means 2 you are multiplying 5 times. So it will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, the answer. That means the first law is when you multiply the same bases with different powers, so you can add the powers. The second one is the same, but here you are dividing. The base is same, the powers are different, and you are dividing the base. So in that case, the powers get subtracted. So in this case, the powers get subtracted. That means if you are considering the same base to be 2, one part to be 5, another part to be 3, and you are dividing them. That means 2 raised to the power 5 divided with 2 raised to the power 3. It is equals to 2 raised to the power 5 minus 3. The powers get subtracted. So this is 2 raised to the power 2, which means 2 times. So 2 2s are 4 is the answer. So the first law is when you are multiplying the same base with different powers, so the powers get added. And the second law is if you are dividing the same base with different powers, the powers get subtracted. Now let's see the third law. Third law is if you are multiplying two numbers with the same powers, right? So that means this can be written as, you can directly multiply them. ax bx is equals to ab raised to the power x. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. तो अगर आपने बेस डिफरेंट लिया, मतलब 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, पावर्स मैंने सेम कर दी थी, बेसिस हो गए डिफरेंट. So this can be written as 2 into 3 whole raised to the power 3. That means 2 3s are 6, 6 raised to the power 3. That means 6 into 6 into 6. 6 3 times. So 6 6 are 36. 36 into 6 is 216, the answer. Right? Now let's see the fourth law. The fourth law is the same. यहाँ पे वो multiply का था, ये अब divide में हो जाएगा. कि अगर आपके पास पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है और आप बेस को डिवाइड कर रहे हो, सो इन दैट केस में पावर कॉमन हो जाती है. फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 3 एंड 4 रेज टू द पावर 3. दिस कैन बी रिटन एज 2/4 होल रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हो आप इसको. ओके, सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ लॉ, विच इज जब पावर की पावर होती है. That means a raised to the power x whole raised to the power y. So in this case, the powers get multiplied. For example, 2 raised to the power 2 whole raised to the power 3. This can be further written as 2 raised to the power 2 into 3. That means 2 raised to the power 6. Here, जब power की power होती है students, तो power gets multiplied. Now the sixth law is anything to the power 0 is 1. किसी की भी पावर 0 हो, चाहे वो एक रैशनल हो, नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है, दिस विल बी इक्वल टू 1. एंड द सेवेंथ वन इज a raised to power minus x is equals to 1 upon a raised to the power x. तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, अगर आपकी पावर है नेगेटिव, तो जब आपकी पावर नेगेटिव होती है तो उसमें उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल. दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर minus 3 कैन बी रिटन एज 1 upon 2 रेज टू द पावर 3. इज इट क्लियर नाउ?
स्टूडेंट दिस इज वन थिंग विच यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट अगर आपका बेस नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है, मतलब -1 की पावर है इवन, द आंसर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वन। आपका आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्योंकि अगर -1 की पावर 2 है, इसका मतलब हो गया -1 इंटू -1, 2 बार माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आंसर 1 ही आ जाए। दैट मीन्स आंसर विल बी पॉजिटिव। पावर इवन है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में आपके वो सारे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। और अगर वही आपकी पावर हुई ऑड, मतलब -1 की पावर 3, दैट मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 2 माइनस साइन कट गए और आपका एक माइनस साइन हमेशा बचेगा। दैट मीन्स you will always get a negative answer. And if the power is even with the negative integer, it will always be a positive one. Okay, students? Now let's see exercise 12.1, question number 1, in which you need to evaluate. Now students, class 7 में भी आपको बताया था, 8 में again आपको बताते हैं, जब भी evaluate हो, simplify हो, आपको आंसर प्रॉपर नंबर में देना है। जब तक वो आपको क्वेश्चन में ना बोले कि आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, तभी आप आंसर पावर्स में छोड़ेंगे। अदरवाइज यू हैव टू कंप्लीटली सॉल्व एंड राइट डाउन द आंसर। सो द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फर्स्ट पार्ट 3 raised to the power -2. So in this case, first we can see here the power is negative. When the power is negative, तो उसका क्या हो जाता है? Reciprocal. So this can be written as 1/3 whole raised to the power 2. And in bracket we will mention the law, which is a raised to power -m is equals to 1/a raised to the power m. So 1/3 raised to the power 2 means 1 का square is 1 and 3 का square means 3 into 3 is 9. So the answer is 1/9. Now let's see the third part. It is 1/2 whole raised to the power -5. Power negative है, so we will again use the negative wala, that a raised to the power -m is equals to 1/a raised to the power m. So 1/2 का reciprocal will be 2/1. 2/1 की power 5. And here in bracket we will write down the law. A raised to power -m is equals to 1/a raised to power m. Students, remember, wherever we are using any property, any law, any identity, we have to write it down. So now 2 raised to the power 5 means 5 times 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. And 1 raised to the power 5 means 1 only. So the answer is 32. Is it clear? Moving on to question number 2. Simplify and express the result in the power notation with the positive exponent. Again read. First you need to simplify. Then you need to express the result in power notation, means कि answer आपका powers में होना चाहिए. With positive exponent means it has to be, the power has to be positive. Negative नहीं होनी चाहिए. अगर negative है तो उसको positive बनाना है. If I see the first part, this is -4 whole raised to the power 5 divided by -4 whole raised to the power 8. So the bases are same, -4. They are getting divided and the powers are different. So इस case में क्या law use होता है? We use the law when the bases are same and they are getting divided with the different powers, the powers get subtracted, right? So this can be further written as -4 whole raised to the power 5 -8. Bases same है, divide हो रहे हैं, different powers है, मतलब a raised to the power x divided by a raised to the power y is equals to a raised to the power x minus y, right? So now 5 minus 8 is -3. So -4 raised to the power -3. आंसर तो पावर में आ गया, बट हमारे यहाँ पे पावर है नेगेटिव. हमें किस में आंसर देना है? पॉजिटिव में. तो अगर आपकी पावर नेगेटिव होती है तो आप उसका क्या कर देते हो? रेसिप्रोकल. दिस कैन बी रिटन एज -1/4
होल रेज टू द पावर 3, 4 का रेसिप्रोकल विल बी 1/4, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रहेगा ही रहेगा, ये वाला तो नहीं चेंज हो जाएगा. So now in bracket we will write down a raised to power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. Now minus 1/4 raised to the power 3. अब पॉजिटिव छोड़ना है तो मैं ये माइनस, अब माइनस की पावर है ऑड नंबर, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, आंसर नेगेटिव आएगा ही आएगा. So this can be further written as minus 1/4 whole raised to the power 3 as answer. Okay. Now let's see the second part. It is 1/2 cube bracket square. मतलब पावर की क्या हो रही है, पावर. जब पावर की पावर होती है उस केस में हम पावर्स को करते हैं मल्टीप्लाई. बट फर्स्ट आई कैन राइट दिस एज 1 raised to the 1 का पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 होल raised to the power 2, बिकॉज वी नो दैट अगर a by b की पावर है x, दिस कैन बी रिटन एज a raised to the power x अपॉन b raised to the power x. पहले तो इसे अलग करना पड़ेगा. नाउ 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, एंड यहाँ पे हो रहा है 2 की पावर 3 होल रेज टू द पावर 2. जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. सो वी विल अगेन राइट डाउन द लॉ a रेज टू पावर x होल रेज टू द पावर y is equals to a raised to the power x into. So this is 1 upon 2, 3 2s are 6 is the answer, because we have to leave the answer in the power notation with the positive exponent. Now let's see the fourth part. This is 3 raised to power minus 7 divided by 3 raised to power minus 10 in one bracket into 3 raised to power minus 5. So first we have to solve the bracket. Inside the bracket the bases are same, they are getting divided, so the powers will get subtracted, right? So this can be written as 3 raised to the power minus 7 minus of minus 10, अगर हम इसको ब्रैकेट में रखें, into 3 raised to power minus 5, and which law we are using, a raised to the power x divided by a raised to the power y is equals to a raised to the power x minus 5. Power minus होती है. Now if you will solve, you will get 3 raised to power minus 7 minus minus plus 10 into 3 raised to the power minus 5. Now minus 7 plus 10 कितना होगा, 3 raised to the power 3 into 3 raised to power minus 5. This can be further written as 3 raised to the power 3 into 3 raised to the power minus 5. Now students, here the bases are same, they are getting multiplied by different powers. In case में powers क्या हो जाती हैं, plus, so it will be 3 plus minus 5, and in bracket you will write down the law a raised to the power x into a raised to the power y equals to a raised to the power x plus y, right? अब 3 plus minus 5, that means 3 minus 5, 3 minus 5 कितना होता है, 3 raised to the power minus 2. We know that we have to leave the answer in the power notation with the positive exponent. So this can be further written as 1 upon 3 raised to the power 2, and in bracket we will again write down the law a raised to power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. Is it clear? Now let's see the fifth part. Here we can say that the bases are not same. It is 2 and minus 7, but the powers are same, minus 3, and they are getting multiplied. So I can use this law. If a raised to power x into b raised to the power x, that can be written as a into b whole raised to the power x, right? This means 2 into minus 7 whole raised to the power minus 3. 2 into minus 7 is minus 14 whole raised to the power minus 3. आंसर आपको पॉजिटिव नोटेशन एक्सपोनेंट में छोड़ना है विद पॉजिटिव नोटेशन. सो इट विल बी, अब माइनस है पावर तो क्या होगा, रेसिप्रोकल. सो इट कैन बी रिटन एज minus 1/14 whole raised to the power 3, ब्रैकेट में लॉ
a raised to power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. अब ये आपका पॉजिटिव हो गया बट एक्सपोनेंट नेगेटिव हो रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस है और -1 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो बचेगा ही बचेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज -1/40 whole raised to the power 3 answer. Clear? Now let's see question number 3, first part, where you have to find out the value of under the bracket 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power minus 1 into 2 raised to the power 2. If I see inside bracket plus में कोई identity law नहीं होता. That means we have to solve the values and then we have to plus them. So 3 raised to the power 0. Anything raised to the power 0 is 1. This can be written as 1 plus 1/4 because power negative है तो ये reciprocal हो जाएगा into 2 raised to the power 2. तो हमने यहाँ पे दो लॉ यूज किए. एक लॉ यूज किया a raised to the power 0 is equals to 1. Second is a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. So if in a one step we are using two laws, so we have to mention both. Now how you will solve the inside bracket by taking the LCM? So it can be 1/1. Now the LCM is 4. ऊपर क्या आएगा 1 के टेबल में 4 4 and 4 के टेबल में 1 1. So now 4 plus 1 into 2 square can be written as 4 here. Now 4 plus 1 is 5. 5/4 into 4. 4 and 4 will get cancelled. What is the answer? 5. They are asking you to find out the value, so no need to leave the answer in the exponent form. Okay. Now let's see second part. 2 raised to power minus 1 into 4 raised to power minus 1 divided by 2 raised to power minus 2. तो आपको क्या लग रहा है इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है ना. बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो इसमें 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. आई कैन राइट दिस एज 2 into 4 होल रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर माइनस 2. ब्रैकेट में आप क्या लॉ लिख सकते हो, a raised to power x into b raised to the power x. This can be written as a into b whole raised to the power x. Now 2 into 4 is 8. 8 raised to the power minus 1 divided by 2 raised to the power minus 2. तो अब इसमें भी अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मेरा माइंड कहता है कि अगर ये पावर्स आपकी डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, सॉरी पावर्स नेगेटिव है तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं. So this can be written as 1/8 divided by 1 upon 2 square, and in bracket I can write a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m. Now this is 1/8 divided by 1/2 का square. It can be written as 4. अब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. तो डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/4 मीन्स 4/1. नाउ 4 1s are 4, 4 2s are 8. So it will be 1/2 as here. क्लियर? आप चाहते तो बेटा इस स्टेप में यहाँ पे जहाँ पे आपने यहाँ पे 8 लिखा है, आप इसी स्टेप में यहाँ पे लिख सकते थे इसको 2 raised to the power 3 whole raised to the power minus 1. आप ये भी कर सकते थे कि आपने इसको लिख दिया 2 raised to the power minus 3 divided by 2 raised to the power minus 2. तो डिवाइड हो रहे हैं, आप उस कंसेप्ट से भी कर सकते थे. क्लियर? देयर इज अ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट स्टूडेंट. 1/2 होल रेज़्ड टू द पावर minus 2 प्लस 1/3 होल रेज़्ड टू द पावर minus 2 प्लस 1/4 होल रेज़्ड टू द पावर minus 2. बेसिस डिफरेंट है बट ऐड हो रहे हैं, पावर सेम है, करेक्ट. इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिस को डायरेक्टली ऐड कर दो, ये कोई लॉ नहीं होता. पावर सेम है, दैट्स राइट, बट दे आर गेटिंग एडेड. तो फर्स्ट तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर पावर्स नेगेटिव है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल. दिस कैन बी रिटन एज 2/1 होल रेज़्ड टू द पावर 2, 3/1 होल रेज़्ड टू द पावर 2, 4/1 होल रेज़्ड टू द पावर 2, and in bracket we can write down a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m.
Now 2 square means 4. By 1 means 1. 1 square is 1. 3 square is 9. 1 square is 1. 4 square is 16. 1 square is 1. This can be further written as 4 plus 9 plus 16. क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी वैल्यू नहीं भी होगी. Now 16 and 9, that means 25. 25 and 4, the answer is 29. Clear? Now students, in homework, you need to write down the laws of exponents along with the quotient which we have discussed and the homework mentioned. Thank you.